Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of our chapter number 3, that is enzymes. So let's start. So dear students, chapter number 3, enzymes, the exercise. So starting from question number 1, that is fill in the blanks. So dear students, the first blank is enzymes are composed of hundreds of dash. तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर यूजुअली प्रोटीन्स इन नेचर, और प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स. तो इसका मतलब हुआ कि एंजाइम भी किससे मिलकर बने हुए हैं? हंड्रेड्स ऑफ एमाइनो एसिड्स. सो द आंसर इज एमाइनो एसिड्स. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एमाइनो एसिड्स. ब्लैंक नंबर 2, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन एज. तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कुछ एंजाइम्स तो सोलरली प्रोटीन्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है, वो प्रोटीनिशियस होते हैं. तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरह से फंक्शन करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने क्या कहा था? दैट इज़ कोफैक्टर. क्लियर? सो सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन एज अ कोफैक्टर. Blank number 3, many enzymes require non-protein component called, the answer is same, the non-protein part is called the cofactor for their proper functioning. Blank number 4, it says enzymes are highly dash in nature. So dear students, enzymes are highly specific in nature. Clear? They are very high specific in nature. So dear students, जैसे कि lipase, it will act upon lipids. The amylase, it will always act upon the amylase. The amylase, it always act upon starch. Clear? इसी तरह से pepsin and trypsin, they act upon proteins, not on the lipids. Clear? So they are very highly specific in nature. Blank number 5, it says the enzymes which carry out the synthesis of dash are integral parts of ribosomes. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पहले पढ़ा था कि ऐसे एंजाइम्स जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, उनके एंजाइम्स का दे आर द पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स. सो द स्टेटमेंट इज द एंजाइम्स व्हिच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ राइबोसोम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write whether the statement is true or false and write the correct statement if it is false. So the first statement is the enzymes important in photosynthesis are found in mitochondria. So dear students, this is a false statement. Photosynthesis के जो enzymes होते हैं they are present in chloroplast. So the correct statement will be the enzymes important in photosynthesis are found in chloroplast. The second statement is large amounts of an enzyme can accelerate the chemical reactions. So this statement is also false. The correct statement is small amounts of an enzyme can accelerate the chemical reactions. Statement number 3, it says Kelvin Melvin proposed lock and key model for enzyme action. तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमने दो ही मॉडल्स पढ़े थे, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड रेट मॉडल. और आपको याद होगा लॉक एंड की मॉडल मेल्विन केल्विन ने नहीं बल्कि एमएल फिशर ने 1890 के अंदर पेश किया था, प्रपोज किया था. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज एमएल फिशर प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन. क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 4, इट सेज the active site of an enzyme is composed of 4 regions. So this statement is again false because the active site of an enzyme consists of 2 regions. उसके 2 regions होते हैं, एक उसकी binding site और दूसरा उसकी catalytic site. Binding site जो है वो binding जो है वो attachment provide करती है और enzyme substrate complex बनाती है. जब enzyme substrate complex बन जाएगा binding site पे, then the catalytic site, it will catalyze the reaction and convert the substrate into products. So the correct statement will be the active site of enzyme is composed of 2 regions.
Statement number 5, it says, structure of an enzyme has no specific importance. So this is not true. This is a false statement. So the correct statement is, the structure of an enzyme has specific importance. क्योंकि enzymes, they are globular proteins, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उनका बहुत अहम होता है. अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उनका डिस्ट्रॉय हो जाए, सो दे विल फेल to catalyze an enzymatic reaction. Now, question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. So it is a multiple choice question. The first statement is, if more substrate to an already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme activity is seen because. तो स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए. अगर हम एक पहले से एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसमें जो पहले से हो रहा है उसके अंदर हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और ज़्यादा वहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, तो ये किस चीज़ की निशानदही कर रही है? नंबर 1, अल्फा ऑप्शन इज़ देयर इज़ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर इज़ एंजाइम. सो नो डियर स्टूडेंट्स, अगर एंजाइम कम होगा तो सबस्ट्रेट ऐड करने से वो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी. ऑप्शन बीटा सेज देयर इज़ प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल दैन देयर इज़ सबस्ट्रेट. यस डियर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि अगर एंजाइम ज़्यादा होगा सबस्ट्रेट से और अगर सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. सो द करेक्ट आंसर फर्स्ट MCQ इज बीटा ऑप्शन. That is, there is probably more enzyme available than there is substrate. Now, the MCQ number 2. If you add more substrate to already occurring enzymatic reaction, यहाँ तक वही पुरानी statement, and it has no effect on the rate of reaction, और अगर उसके rate of reaction पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप substrate add कर रहे हैं, enzymatic reaction हो रहा था पहले, आपने substrate add किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा. What is the form given for the situation? तो situation को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा, अगर हमारे पास 100 एंजाइम हैं और 100 सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो चुके हैं, आप और ऐड करते हैं सबस्ट्रेट लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट मीन्स ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, और जब ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन. सो the option alpha is correct. So this is called as saturation, means all the active sites have been occupied. अब आप substrate add करेंगे भी, so there will be no effect on the rate of reaction. Now MCQ number 3. The rate of an enzyme catalyzed reaction. यहाँ पर एक statement दी गई है और उससे related हमें नीचे correct option को select करना है कि एक enzyme catalyzed reaction का जो rate है is constant under all conditions. तो हमने dear students इसको डिस्कस किया था. It is not constant under all conditions. ठीक है, pH इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली इंक्रीज करता है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, डिक्रीज करने से डिक्रीज करता है. सो इट इज़ नॉट सेम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. सो द अल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Beta option says decreases as substrate concentration increases. So dear students, rate of enzyme catalyzed reaction substrate concentration increase करने से यहाँ पर हमारे पास कोई specific option नहीं देगी क्योंकि हमने बात की थी कि substrate concentration के हवाले से हमारे पास 2 options हैं. Low substrate concentration हो, so it is directly proportional to the substrate available rate of reaction, और अगर high concentration में होगा substrate तो शुरू में तो rate of reaction increase करेगा लेकिन उसके बाद there will be no more increase in the rate of reaction. So dear students, the beta option is also not correct for this statement. Option Charlie's cannot be measured. So dear students, it is measurable. So ये भी option correct नहीं है. Now the only remaining option we are left with delta option. It can be reduced by inhibitors. So yes dear students, जो enzymatically catalyzed reaction होते हैं हम उसको कम तो कर सकते हैं लेकिन किसकी मदद से? Inhibitors की मदद से. Clear? और inhibitors क्या होते हैं? The substances which bind to the active site of enzyme in place of substrate and stop the formation of products. So
The correct option for the third MCQ is delta option, that is they can be reduced by inhibitors. Now the fourth MCQ. The active site of an enzyme never changes. Alpha option is never changes. No, my dear students, it changes. तो ये first option जो है हमारी जो है वो suitable नहीं है. The beta option says forms no chemical bond with substrate. So dear students, we have studied that there is the formation of chemical bond between the enzyme and substrate. So option beta is also not correct. Option Charlie says determines the active site of an enzyme, determines by its structure the specificity of the enzyme. Yes dear students, तो एक्टिव साइट की ही शेप होती है जो कि बेसिकली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करती है और उसी शेप का ही सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड करता है, तो तभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. नाउ द डेल्टा ऑप्शन लुक्स लाइक अ लंप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंजाइम. सो इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी. इट्स नॉट अ लंप. क्लियर? So the correct answer for MCQ number 4 is Charlie. Now the last MCQ which is given in our textbook is which statement about enzymes is not true? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि एंजाइम के हवाले से गलत है, सच नहीं है? The option alpha says they consist of proteins with or without a non-protein part. So yes dear students, it is a correct. So enzymes are proteins. वो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने एंजाइम के वाले से. ऑप्शन बीटा सेज they change the rate of catalyzed reaction. So definitely they increase the rate of reaction of enzyme catalyzed reaction. Option Charlie, they are sensitive to heat. Yes, the enzymes are sensitive to heat. Every 10 degrees Celsius increase in the temperature doubles the rate of the chemical reaction, but up to a certain limit. Clear? So ये भी enzyme से ही related है, ये true है. And we are left only with the delta option. It says they are non-specific in their action. Yes dear students, आप समझ ही गए होंगे कि enzymes, they are very specific in their actions. So this is not related and it is not true about the enzymes. So the correct answer for MCQ number 5 is delta option. Now question number 4, that is of short questions. So first short question is list 2 conditions that destroy enzymatic activity by disrupting bonds between the atoms in an enzymes. तो 2 conditions वो कौन सी थी जिसमें कि bonds जो होते हैं वो destroy हो जाते हैं? तो dear students, आपको याद होगा कि high temperatures के ऊपर जब ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज कर जाएगा तो एंजाइम के जो एमाइनो एसिड्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी वाइब्रेशंस वायलेंट हो जाएंगी और उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड दैट लीड्स टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. क्लियर? और इसी तरह से दूसरी ऑप्शन हमने दूसरी जो कंडीशन थी, द एक्सट्रीम चेंज इन pH, इट ऑल्सो ब्रेक्स द बॉन्ड एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, so leading to the denaturation of enzyme. तो ये 2 conditions हैं, extreme change in pH and high temperatures. Short question number 2. It says, how do low and high temperature affect an enzyme activity? So temperature is directly proportional to enzyme activity. हमने पढ़ा था factors affecting rate of enzyme action में. Low temperature पे rate of reaction low हो जाता है, high temperature पे rate of reaction high हो जाता है, but up to a certain limit. Clear? So high temperature पे भी हमने बात की थी कि every 10 degrees Celsius rise in the temperature and doubles the rate of a chemical reaction which is enzymatically catalyzed. Now the third short question is, what is prosthetic group? तो dear students, हमने पढ़ा था कि prosthetic group अगर enzyme का जो cofactor है, if the cofactor is tightly and covalently bonded with the protein part of the enzyme, so it is called as prosthetic group. Or dear students, now the fourth one is define inhibitors of enzymes. तो inhibitors हम बात कर चुके, last topic पढ़ा था इस chapter का. These are the substances which bind to the active site of enzyme in place of original substrate and
retard or stop the product formation. Clear? और फिर हमने इसकी कैटेगराइजेशन भी की थी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर रिवर्सिबल के आगे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. Clear? And number 5, the fifth short question is, how does an enzyme accelerate a metabolic reaction? So dear students, हमने पढ़ा था कि जो enzymes होते हैं, they increase millions of times the rate of reaction by in enzymatically catalyzed reactions by lowering their activation energy. तो एक्चुअली वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के क्या क्या तरीके बताए थे आपको मैंने, वो 3 तरीके आपको याद होंगे. by disrupting the charges of on the active site and the substrate, by modifying the shape or altering the shapes, clear, and by bringing the substrate into correct orientation. तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है by the enzymes to accelerate the enzymatically catalyzed chemical reactions. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.